Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of solid state physics. Let's begin. एठारे आमे solid state physics रो 2 नंबर यूनिट जाकि थिला लैटिस डायनामिक्स एवं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तार डैश पूरण टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कशन करबा। प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 1 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द नेम फोनन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फोन व्हिच मीन्स डैश। फोनन टा गोटे ग्रीक शब्द रु आसी। ग्रीक शब्द कौन ना फोन। ए फोन रो अर्थ कौन? साधारणतः भाव में तुम्हें मैंने लक्ष्य कर आमे कहे फोन टा उठा फोन करी से जो फोन से हूँ गोटे ग्रीक शब्द। से ग्रीक शब्द विशेषकर आमे फोनन क्वांटा ऑफ लैटिस एनर्जी से फोननटा से फोन वर्ड रु ही डिराइव होइछि। से ग्रीक वर्ड फोन रु। तो से फोन रो अर्थ कौन? से फोन रो अर्थ होछि साउंड which means sound. The name phonon comes from the Greek word phone which means sound. Question number 2, the lattice dash are the result of absorption of heat energy. Lattice रो कौन कारण रु आमे पाउछे heat energy absorption हेउछि बोली due to lattice vibration. The lattice vibration are the result of absorption of heat energy. Question number 3, the process in which the frequency of the incident photon is the same as that of the scattered photon is known as dash process. आम एमती गोटे प्रोसेस जो इंसिडेंट फोटोन फ्रिक्वेंसी टा तार स्कैटर्ड फोटोन फ्रिक्वेंसी सांगे सामान हो। तो से प्रकार प्रोसेस को कौन कह दैट इज ए नॉर्मल प्रोसेस व्हिच इज ए नॉर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन व्हिच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज द सेम एज दैट ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज नोन एज नॉर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, फोनन ओबेज डैश स्टैटिस्टिक्स। आम फोनन को बोजन अंडर रखुचे। फोटोन फोनन डब्ल्यू बोजन एगुड़ आम बोजन अंडर जामें पार्टिकल को बोजन एवं फॉर्मियन करके 2टा सेक्शन में क्लासीफाई करते जेहेतु फोननटा बोजन अंडर जाऊँगी तेणुक सी जो स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। फॉर्मियन गुड़िक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे जेहेतु फोनन हूँ गोटे बोजन तेणुक सी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ही सैटिस्फाई कर। फोनन ओबेज बोज आइंस्टाइन्स स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस गोटे डायमेंशन मोनोएटॉमिक लैटिस विथ नियरेस्ट इंटरैक्शन इज गिवन बाय तार पाखापाखि जो इंटरैक्शन होची ताको आमे डिफाइन कले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट साइन के अल्फा डिवाइडेड बाय 2 जेमठारे कि ओमेगा नॉट रो वैल्यूटा 4 अल्फा डिवाइडेड बाय m रो अंडर रूट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एठारे अल्फाटा को कहूचे इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। क्वेश्चन अछि द रिलेशन इज नोन एज डैश रिलेशन। ये जो रिलेशनटा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट साइन के अल्फा बाय 2 या केउ प्रकार रिलेशन? यह हूँ एक डिस्पर्सन रिलेशन। वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन रो डिस्पर्सन रिलेशन हूँ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट साइन के अल्फा डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वांटम यूनिट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज ए डैश। पूर्व कही जो फोनन आम डिस्कसन करुले गोटे ग्रीक वर्ड फोन आसी जार अर्थ साउंड। से फोनन कौन एक्चुअली? से फोनन हूँ क्वांटम यूनिट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन
लैटिस वाइब्रेशन क्वांटम यूनिट को आम कहे फोनन. द क्वांटम यूनिट ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज ए फोनन. क्वेश्चन नंबर 7. Specific heat approaches the classical value dash at high temperatures and vanishes at temperature equal to dash. Specific heat रो classical value टा high temperature रे केते. Specific heat CV is equal to 3R. CV is equal to 3R. R stands for universal gas constant. High temperature situation रे से कहूँ तो केते टेम्परेचर ये सीभीटा टेन्स टू 0 हो से जो टेम्परेचर हो 0 केल्विन टेम्परेचर एट 0 केल्विन टेम्परेचर रे 0 केल्विन टेम्परेचर रे दैट सीभी टेन्स टू 0 केल्विन मीन्स लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर रे तार क्लासिकल वैल्यू होची 3R. क्लासिकल वैल्यू यू कैन नोट दैट पॉइंट. क्लासिकल वैल्यू CV इज इक्वल टू 3R एट हाई टेम्परेचर. सेम क्लासिकल वैल्यू एट 0 केल्विन टेम्परेचर रे CV टेंड्स टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू डिवाई लॉ द एक्सप्रेशन फॉर CV अप्रोचेस द क्लासिकल वैल्यू 3R एट हाई टेम्परेचर. पूर्व क्वेश्चन टा बट एट लो टेम्परेचर CV इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डैश. यदि आम डिवाई मॉडल को लक्ष्य करवा CV टार वैल्यू 3R आसी जाउछि हाई टेम्परेचर रे किंतु लो टेम्परेचर सिचुएशन रे CV टा कहा संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होछि. CV टेम्परेचर रो क्यूब ऑफ दैट टेम्परेचर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होछि. हम कहि परबा TQ. Question number 9. Divide temperature is the independent at which the highest dash mode is excited. The divide temperature is the temperature. Divide temperature होची सही temperature at which the highest dash mode is excited. सबुठारु केउ मोडटा excited होची सही temperature रे. Highest frequency mode is excited. Highest frequency mode is excited. Divide temperature is the temperature at which the highest frequency mode is excited. Question number 10. The optical phonons show no dash near the long wavelength limit at brilliance zone. Optical phonons कौन शो करिवो नाही केउठारे नियर द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट एट ब्रिलियंट जोन. जदि को आम ब्रिलियंट जोन रे आम ऑप्टिकल फोनन्स को देखेबा से कौन दर्शाइब नहीं. सो नो डिस्पर्सन. द ऑप्टिकल फोनन्स शो नो डिस्पर्सन नियर द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट एट ब्रिलियंस जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Dulong and Petit simply found that the unit value of specificity of a solid per mole was about dash joule Kelvin inverse, which is same as dash. Dulong and Petit जन साइंटिस्ट से कौन दर्शाइथिले बा से तांकर ऑब्जर्वेशन कौन पाइथिले. तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड पर मोल. वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड पर मोल केते आसुथिला केते जूल केल्विन इनवर्स. दैट वाज 25 जूल केल्विन इनवर्स व्हिच इज सेम एज डैश. ता का संगे समान जहाँकि 3R संगे समान. सीभीटा जेनेराली आम जो 3R कहूला हाई टेम्परेचर रे डिलंग एंड पेटिस दर्शाइले जे द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड पर मोलटा केते 25 जूल केल्विन इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द फोनन्स ट्रावेल विथ द वेलोसिटी ऑफ डैश इन सॉलिड. फोननटा केते वेलोसिटी रे गति करूची सॉलिड रे. फोनन वेलोसिटी ऑफ साउंड. फोननटा जेनेराली साउंड रो वेलोसिटी जा सेही वेलोसिटी रे ही कोनोसी गोटे सॉलिड मीडियम रे गति करूची. सॉलिड मीडियम रे साउंड रो वेलोसिटी इज सेम as that of phonon. Phonon travel with the velocity of sound in the solid.
Question number 13. The lattice dynamics atomic motions are frequently found to be adequately described as harmonic dash waves. Lattice dynamics रे आम जो आटमिक मोशन गुड़िक आम लक्ष्य करुचे से आटमिक मोशन गुड़िक फ्रिक्वेंटली फाउंड टू adequately described as harmonic dash waves. से प्रकार हार्मोनिक वेव को आम कहे दैट इज that are traveling harmonic waves, that are traveling harmonic waves. तो ये जो 13टा क्वेश्चन थिला ताहा सॉलिड स्टेट कोर पेपर रो यूनिट नंबर 2 रो फर्स्ट सेक्शन एलिमेंटरी डायनामिक्स ऊपर ये 13टा क्वेश्चन थिला. नेक्स्ट टाइम में देखिबा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तार आ गोटे पोर्शन रो यूनिट 2 रो आ गोटे पोर्शन तार रिलेटेड किछि different types of questions. Question number 14. The substance in which the resultant magnetic moment of the atom is zero are called dash substances. से गुडी को हमें केउ प्रकार substance कहि दे परिबा. Those substances are called non magnetic जे गुडी कर magnetic moment zero से गुड को आम कहिबा non magnetic substance. Next question number 15. The unit dash of magnetic field strength is also equivalent to Newton watt hour inverse. The unit of dash of magnetic field strength, the unit of magnetic field strength unit कौन ना ampere into मीटर इनवर्स जे कि इक्वल होउची न्यूटन वाट पर आवर इनवर्स सागरे. यू कैन चेक दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड रो मैथमेटिकल फॉर्मूलाटा कौन तार गोटे आसीजिव ताको जदि आम सिंप्लीफाई करबा तार फॉर्मेटटा इन टर्म्स ऑफ फोर्स वाट आवर इनवर्स माने फोर्स पावर पावर रेट ऑफ पावर संगे समान आसीबो. Next 16 number question. The two fundamental forms of magnetism, one is diamagnetic and another one is paramagnetic. Diamagnetism and paramagnetism have their origin in dash and permanent dash respectively. Look that question. The two fundamental forms of magnetism, diamagnetism and paramagnetism, have their origin in induced and permanent magnetic moment, respectively. माने डायमैग्नेटिक ऑरिजिन टा इंड्यूस्ड और परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होछि कार पैरामैग्नेटिज्म रो. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. द सॉलिड्स एक्जिबिटिंग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आर कॉल्ड डैश. जो सॉलिड गुडी को स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन माने आपना छाए छाए मैग्नेटाइज्ड हो जाउछि से गुडी को हमें कोन कहिबा दोज आर कॉल्ड ferromagnets. Those are called ferromagnets. Question number 18. The permanent dipoles originate. permanent dipole को आमे केउठारु सृष्टि कराई छे माने तार सृष्टि पछर कारक गुडी को कोन कोटी होची ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गोटे कोन एवं अन्यटी होची न्यूक्लियर स्पिन. तो परमानेंट डाइपोल रो सृष्टि पछरे आम मुख्यतः देखुचे ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर स्पिन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन एगुड़िक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पछरे ही दायी. The permanent dipoles originate the orbital motion of the electron spin and the nuclear spin. Question number 19.
the property of a magnetism is an atom is essentially a dash effect से प्रकार इफेक्ट को आम कहूचे क्वांटम इफेक्ट that effect is called quantum effect the property of magnetism in an atom property of magnetism in an atom गोटे आटम रो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टा इज इसेंशियली ए क्वांटम इफेक्ट तार कारण होची गोटे क्वांटम इफेक्ट ही रेस्पॉन्सिबल होची से आटम रो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पछरे कारण आम गोटे आटम कहले ये सब कारक गुड़िक आम कहले परमानेंट डाइपोल मूवमेंट सृष्टि होवार जमी ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन न्यूक्लियर स्पिन विशेष भाव में से गुड़िक क्वांटम इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 at room temperature the diamagnetic susceptibility is dash than that of paramagnetic susceptibility room temperature अर्थात atmospheric temperature जहाँ अच्छी से जदि आम डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखा माने गोटे पारामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपेक्षा तार भैल्यू केते आसीज तार भैल्यूटा कम आसीबो दैट वैल्यू इज स्मॉलर डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम आसीज पारामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थारू क्वेश्चन नंबर 21 द मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश मैग्नेट्स मस्ट हैव वेरी लार्ज कर्सिव फोर्स materials required in the manufacture of dash magnets must have very large coercive force क्यों प्रकार मैग्नेट रे कर्सिव फोर्सटा सब अधिक से हूँ परमानेंट मैग्नेट रे कर्सिव फोर्सटा सब अधिक क्वेश्चन नंबर 22 द एनर्जी प्रोडक्ट बी एंड एस has to be a dash for the application of hard materials. Energy product Bs has to be a dash for the application of hard materials. To be a iron, sorry, the energy product BH has to be a dash for the application of hard materials. ये क्वेश्चन टा रखिते ताको आमे पर कहबा द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ डैश इज 142 केल्विन द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन next question number 24 the dash is associated with the tendency of electric charges partially to shield the interior of a body from an applied magnetic field that is for diamagnetism the diamagnetism a superconductor acts as a strong diamagnet because it dash a magnetic field entirely from its interior that repels the entire magnetic field from that of interior तेणुकरी से superconductor गोटे strong diamagnetic भाई काम करुच्ची lagging of magnetization behind the magnetizing field when the ferromagnetic substance is taken through a complete cycle of magnetization से प्रकार फेनोमेनन को आम कहूचे दैट इज हिस्टेरेसिस that is known as hysteresis. Next question number 27 magnetic susceptibility is a dash quantity magnetic susceptibility is a scalar quantity हम जनरली ताको ऐड कर दे परिबा बा स्केलर एडिशन रूल गुडी को वैलिड रहियो ससेप्टिबिलिटी फाइ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइ तेणुक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर 22 थिला द एनर्जी प्रोडक्ट BH हैज टू बी डैश फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हार्ड मटेरियल्स आई थिंक BH टा कौन आसीबो BS वैल्यू
मैं बी एस कप जनरल हिस्टोरीसिस कप कहूचे इट्स टू बी ओके क्वेश्चन टाको छाड़ दे था तेणुकरी ये वीडियो माध्यम आमे डैश पूरण टाइप सर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कसन करने जहाँकि यूनिट नंबर 2 रो सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट नंबर 2 थला एलिमेंटरी डायनामिक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वेश्चन नंबर 1 to 13 फर्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 up to 27 second portion so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.